Hello everyone. Today we are gonna start our chapter 1 exercise geography. Chapter name the earth in the solar system. Okay, as we have completed our chapter 1 video, as I hope you all have watched that video, the chapter 1 which we have, in that chapter we have studied what is the earth and what is the solar system, what are the celestial bodies, why are the earth and the stars are different, why are the planets and stars are different. So now in this exercise we are going to answer all the questions which were asked to us, right? So those are the question and answers, true or false, sorry, MCQs, and fill up the blanks. So let's begin with it. So the first question is why the planets and the stars are different from each other. The planets and stars are different from each other because, as we have read in our last video, we have seen in our last video, planets does not have their own heat and light, right? But star possesses their own heat and light. प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है. अगर अर्थ को भी हीट और लाइट की ज़रूरत होती है तो वो उसके लिए कहाँ से लेते हैं, वो सन से आती है, राइट. एंड सन इज़ द नियरेस्ट स्टार. बट स्टार्स के पास अपनी हीट एंड लाइट होती है. जैसे हम सन को देखते हैं कि उसके पास उसकी खुद की हीट और लाइट है, बट प्लैनेट्स के पास नहीं होते हैं. ऑल द प्लैनेट्स डिपेंड्स अपॉन द स्टार्स. द प्लैनेट्स आर usually smaller than the stars. Obvious, all the 8 planets are smaller than the sun, but stars are very huge, right? Huge, comprises of to it compared to its planets. So this is the difference between the planets and the star. So what is mean by the solar system? Next question. सोलर सिस्टम क्या होता है, राइट? सोलर सिस्टम हमने पढ़ा था वीडियो में, लास्ट वीडियो में. आप चेकआउट कर सकते हैं हम किस वीडियो की बात कर रहे हैं, जब फर्स्ट वीडियो की. So that is, the solar system is the family of the sun. The solar system refers to the family of the sun. And solar system comprises of the sun, the 8 planets, satellites, some celestial bodies known as asteroids, comets and meteoroids. Together, इन सब चीज़ों को जब साथ में, okay, the sun, 8 planets, celestial bodies such as asteroid, comets and meteoroids, when we combine all of these together, then it will be known as the solar system. Fine. So let's move to our next question, that is, name all the planets according to the distance from the sun. Okay, name all the planets according to the distance from the sun. So these are the first planets, means फ्रॉम द सन, मतलब सन के यहाँ से जो प्लैनेट्स की अगर हम काउंट करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनके नाम होने चाहिए इन सीक्वेंस. द फर्स्ट प्लैनेट विल बी आफ्टर सन विल बी द मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. Okay, this is the sequence of the planets arranged one by one after the sun. Fine. So the Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn and Neptune. Note the thing, in some books you will find the Pluto as well, but Pluto is not the planet, as I have mentioned in the video. The Pluto is not the planet. Pluto is the dwarf planet, dwarf planet means they have the size and the character like planet, but not all the characteristics of the planets are followed in it. Fine. So now the next is, why is the Earth called a unique planet? The Earth is called the unique planet because the Earth is called the unique planet because the Earth is the Earth is the only planet which has the favorable conditions that supports the life. Means अर्थ के पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को या एनिमल को या प्लांट्स को लाइफ मतलब सर्वाइव करने के लिए चाहिए होते हैं. फाइन. द सेकेंड पॉइंट, द वाटर एंड द एयर इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल. मीन्स वो हमको, जैसे हमने लास्ट पॉइंट में देखा, तो हमको एयर और वाटर इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल. मीन्स विदाउट एयर एंड वाटर सर्वाइवल इज़ quite difficult. Fine.
And the last point is it is neither too hot neither too cold. मीन्स अर्थ का जो टेम्परेचर है वो नहीं ज़्यादा गर्म है नहीं ज़्यादा ठंडा है, हम इस टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं. बट अगर रिस्पेक्ट हम दूसरे प्लैनेट्स के बारे में अगर हम देखें तो दूसरे प्लैनेट्स में हम देखते हैं तो हम अगर अर्थ के क्लोज़र प्लैनेट्स में जाते हैं, मीन्स अगर हम मार्स वीनस में जाते हैं तो वो प्लैनेट्स कंपैरेटिवली बहुत हॉट है. बट अगर हम मार्स और वीनस से अगर दूर जाते हैं पीछे की साइड मर्क्यूरी और वीनस, और अगर हम मार्स और पीछे की साइड जाते हैं जुपिटर नेपच्यून की साइड, तो वो जो ही प्लैनेट्स है वो कंपैरेटिवली बहुत कोल्ड है. बट अर्थ ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे वो ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है. सो दैट मेक्स इट अ यूनिक प्लैनेट. ओके, सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट. वाई डज वी सी ओनली दिस वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? वाई हम हमेशा सिर्फ वन साइड ऑफ द मून ही क्यों देखते हैं? वाई? सो द आंसर इज बिकॉज moon take around 27 days to rotate to revolve around the sun. For example, imagine this is our earth, this dot is our earth, fine, and this is our moon. So this is the earth and this is the moon. Here is the moon. So if the moon it takes 27 days to revolve around the earth in such a direction. So it takes 27, and it takes exactly 27 days to revolve earth on its own axis, to rotate earth on its own axis. So both the things are going simultaneously. If the earth is going like this, right, if the earth is facing with the earth is like going like this, then the moon will come like here. So both the things will go in a same flow within a same speed, and both takes exactly the same time period. So that makes the only one face of the moon is visible to us. That is the one face of the moon is only visible to us within the 27 days. Okay, so the next question is, what is universe? A galaxy is a huge system of billions of stars and the clouds of dust and gases. The millions of such galaxies makes up the universe. Means यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स क्या है कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था कि उसमें हमने एक गैलेक्सी का फोटो मैंने आपको शो किया था, राइट. सो दैट इज़ अ गैलेक्सी. इफ अगर ऐसी बहुत सारे गैलेक्सीज अगर कंबाइन हम करें, मर्ज हम करते हैं, तो उन सारी गैलेक्सीज को हम कंबाइन करके हम बोलते हैं कि दैट इट इज़ अ यूनिवर्स. फाइन. सो नाउ check it out. The next topic, the next is take the correct answer. Okay, so take the correct answer. MCQs. Which planet is known as the earth twin? मीन्स कौन सा प्लानट है जो अर्थ का ट्विन, मीन्स एग्जैक्टली लाइक सेम, मीन्स मोस्ट ऑफ द फीचर्स उसके अर्थ से सेम होनी चाहिए. जैसे हम बोलते हैं कि शेप में होना चाहिए और सर, तो दैट इज़ द वीनस. एज हमने न्यूज़ में कुछ टाइम पहले हमने न्यूज़ में देखा था कि वीनस पे हमको वाटर ड्रॉपलेट्स भी फाउंड हुए हैं. मीन्स वहाँ पे पानी की हमको रिसर्च चल रही है और हमको ऐसा मिला है कि वहाँ पे पानी है. फाइन. तो हम इसीलिए वीनस को अर्थ ट्विन बोलते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थ और वीनस के मैच करते हैं इरिस्पेक्ट ऑफ अदर प्लैनेट्स, राइट. दैट्स व्हाई वी कॉल द अर्थ वीनस एज अ अर्थ ट्विन. एंड विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? Okay, if we start the counting, so which will be the third nearest planet? So the first one will be the Mercury, then the Venus, and the third will be the Earth. Okay, after the Earth there is a Mars, and Mars के बाद फिर हमारा आता है asteroid belt. So this will be the sequence. So Earth is the third nearest planet to the Sun. Okay, the next question is, all the planets move around the Sun in elongated path. Okay, this path is known as elongated path, and the circle which we called it as a orbit. Fine. So the path, we call the path as a elongated path. In certain books you will find the circular path, this option, but this we don't have to mark this, we have to mark elongated path, because the actual term given to it is elongated path. Okay, then the next is, the polar star indicates the direction to it. पोलर स्टार किस चीज़ का डायरेक्शन शो करता है? तो एज हमने देखा है कि इफ़ दिस इज़ द अर्थ, फाइन, सो दिस विल बी द नॉर्थ पोल.
Okay, and the star above the north pole is known as polar star, and it shows the direction of north. The next question is, the asteroids are found in between the orbits of, एस्ट्रॉइड कहाँ पे मिलते हैं हमको, कौन से ऑर्बिट्स के बीच में मिलते हैं, तो इट इज़ बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर. Asteroids are found between the Mars and the Jupiter. Okay, let's move towards the next slide. This is the last topic, fill up the blanks. Fine, in fill up the blanks, let's start. A group of stars forming the various pattern is called constellations. Means if there is a single star, then it is called a star. But if the group of stars are there and they are forming certain patterns, the patterns which I have showed in the last video, like the Big Bear, Small Bear, Saptarishi and all, so those patterns are known as constellation, and which are formed of stars. Fine. Then the second is the huge system of stars is known as, if बहुत सारे stars को अगर हम साथ में combine करते हैं, then what will we call it? Then we call it a galaxy. Okay, the third is the moon. The moon is the closest celestial body to the earth. The moon is the closest celestial body to the earth. Okay, now note the point. The moon is the closest celestial body to the earth, but the sun is the nearest star to the earth. Fine, so there is a difference. The sun is the nearest star and the moon is the closest celestial body to the earth. Fine. Okay, the next is the earth is the third nearest planet to the sun. It is right. The earth is the third nearest planet to the sun. Fine. The last question is, the planets do not have their own heat and light. Yes, this is fact, as we have read in the first question. The planets do not have their own heat and light. So that's it. As I hope you all got the points, and I hope you have all have checked our last video, the video of regarding this topic, the earth and the solar system. So by the reference of that video we can find out all the answers of this exercise. And so thank you for today. Thank you all of you to be here, and I hope you all continue to watch our upcoming future videos. Thanks. Have a nice day.